Good morning. It's again 8 a.m. and we are not sleeping because of this Chota Sahab searching cats and dogs. Давай, Ванюшкин, заходи в песочницу. Ваня. Да нет. Да, я потом достал. Вот какой я достал. Вот и как я его отсюда достал. गुड मॉर्निंग गाइस। देख रहे हो कितनी मस्त तड़पती हुई धूप निकली हुई है। इतनी गर्मी कब शांत होगी। और ये देखो हमारे स्विमिंग पूल का स्टेटस, बस टाइल लगनी रह गई हैं ऑलमोस्ट और पेड़ ला के खड़े कर देंगे। अब तो बालकनी में सुबह भी 10 सेकंड भी नहीं रुका जाता है। चलो चलते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। भाई साहब गर्मी का कहर ऐसा जबरदस्त वाला, गाड़ी के एसी काम नहीं कर रहे, घर के एसी काम नहीं कर रहे। और अभी मैं पिछले 4-5 दिन जम्मू कश्मीर था, तो श्रीनगर से ऊपर, श्रीनगर तो बढ़िया मौसम था, लेकिन जम्मू में भी सेम गर्मी है। हम वैष्णो देवी के लिए ऊपर दर्शन करने के लिए गए थे माता रानी के, रात को 12 बजे। सो रात तक तो ठीक था, वापस आते वक्त क्या गर्मी थी। और सीरियसली मैं बहुत से लोगों को वहाँ पे सैल्यूट करता हूँ। पिट्ठू पालकी वाले, मतलब उनकी चलो हैबिट बन गई है, उनका रूटीन में आ गया है तो वो कर सकते हैं। बट कई लोग जैसे लेडीज़ भी, मतलब बच्चे को भी लेके चल रही हैं सिर पे, या फिर कोई थैला रखा हुआ है या कुछ रखा हुआ है। सीरियसली मानना पड़ेगा, कुछ लोग तो बहुत ओल्ड एज वाली फीमेल्स भी थी, मेल भी थे। इवन इस बार तो मैंने आज तक कभी नोटिस नहीं किया था शायद, लेकिन कुछ लोग हैंडीकैप भी थे। सो मतलब सीरियसली हैट्स ऑफ टू देम, सीरियसली। अभी थोड़ा सा आज लग रहा है मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, मतलब कि गर्मी कम है। अभी भी 41 डिग्री दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू गाड़ी और वेदर रिपोर्ट। जल्दी से बारिश आएंगी तो ठीक होगी। और मेरी फैमिली वहाँ मॉस्को में आराम से 7-8 डिग्री टेम्परेचर में फार्म हाउस में एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ का वेदर हमेशा ही ऐसा रहता है, 12 डिग्री 15 डिग्री। और गर्मियों में वहाँ पे क्या होता है कि सुबह 3 बजे दिन निकल जाता है और रात के 10 बजे तक मतलब लाइट रहती है। अब जैसे समर स्टार्ट हो गया ना जून और जुलाई में, 3 बजे दिन निकल जाएगा, रात के 10 बजे तक लाइट रहेगी। तो मैं लेट सोता था कई बार, तो दिन में 2 या 3 बजे आते थे, वो भाई साहब तो दिन निकल गया। और इवन कई जगह तो कहते हैं नॉर्वे वगैरह में रात ही नहीं होती है, कुछ टाइम ऐसा पीरियड होता है, यूरोप के भी कई पार्ट में शायद, कि रात ही नहीं होती है वहाँ पे, डे लाइट ही रहती है वहाँ पे। And now Ivan is sleeping and I have some time. You can say free time, but it's not free because I have to cook lunch. And I decided today to cook rajma. Rajma I bought already. This is onion with ginger garlic paste. I'm using this one. I chopped tomatoes and it will take some time to cook, then we will enjoy. And meanwhile I'm cooking. Rajma is getting ready. I bought this set for spices. I brought it from India. Now I will wash it and put all spices so it will be same like in India. Rajma is ready. This is also some kind of veg roll and we are going to eat. Happy eating. And now I'm washed everything and I'm going to put here spices.
Ivan wants to go to the first floor. He asked to go. This time we didn't go there. Chalo, let's take a look. Давай. Nobody stayed here now. It's kind of guest room. Or this is my room when guests come. From here we have a good, nice view on our garden. And this is second room. This is guest room for sure. When my friends or parents' friends come, they stay here. Here also nice. Look. Вот. А дальше что? Делать, Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and work once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.